Introduction to Visual Basic for Class 8, Subject Computer. In our previous video, I'll explain about the VB programming language, coding, OOPS concept, event-driven model, etc. Okay, in this chapter, further we'll discuss about the other elements and other tools. The first is integrated development environment. It means Visual Basic IDE allows the programmer to create, run and debug Windows programs in one application without the need to open additional programs. It means in the diagram you can see easily it's a single environment or single window. In this single window we can execute, we can create a program both. So that's why it's called integrated development environment. Okay, we can't have need other and platforms. Clear? When Visual Basic is loaded, the new project dialog window is displayed. The new project dialog allows the programmer to choose the type of Visual Basic program to be created, standard exe, which is highlighted by default. Clear? So in this Visual Basic we always create the standard exe files. Exe files, it means executive files. Okay, so we will always create a standardized executive files in the VB. So next is the new project dialogs contain 3 tabs. Okay, जब आप अपना नया project बनाएंगे तो 3 contents उसमें होते हैं. The first one is new. New, it means you want to make your new project. Then existing, it means for opening the saved project. अगर आप save को open करना चाहते हैं then you will open. Recent, it means for opening a project that has been previously loaded into the IDE. Recent, it means recently जो project आपने run किया था वही program आपको open करना है, that is recent. Next, in the window you can see the left side there are many types of tools, and mid of there are a project 1 form 1 you are using here, and the right side you can see there are a project name and others. Clear? So this is the whole thing. It means this is the window of the VB programming. Clear? Next is toolbox. There are many type of toolbox are available here. Toolbox consists of all the controls essential for developing a VB application. Controls are tools such as boxes, buttons, labels and other objects drawn on a form to get input or display output. It means by their tools, using of tools, we can create a form, and output and input we can give and take. Clear? So when you will create your form, the project form 1 window contains a form named form 1. Clear? जब आप अपना project बनाएंगे तो वहाँ form 1 कर कर आपका एक project open हो जाएगा, and this is the GUI based. A GUI is the visual portion of a program. It means GUI, it means the visualization of that program. Clear? I already explained about the GUI. It means visual होगा, graphic use होगी. Clear? This is the where the user enters data to the program and where the program displays its result. वो window वो होगी जहाँ पर आप अपना input देंगे, then output भी वहीं से आपको मिलेगा. Clear? And the form layout window enables the user to specify the form position on the screen where the program is executed. It means वहाँ पर एक आपकी position set होती है, already predefined position होती है form की, and then आप उसे execute करते time move कर सकते हैं the center. So here are some tools. First tool is pointer. Pointer, it means it is used to select the object. Select the object, it means जैसे हमें कोई पूरा object select करना है तो हम उसके आस पास पूरी boundary select कर सकते हैं. This is the selection. Next is picture box. It is used to display images. Next is label. It is used to display fixed text on the form for remark. We can see in the market many type of project are there. They have the labels. Clear? The fixed text होता है उसमें, यही हमें यूज़ करना है. टेक्स्ट बॉक्स, इट मीन्स इट इज़ यूज टू एडिट द टेक्स्ट. बहुत सारा टेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं. फ्रेम, इट इज़ यूज टू ग्रुप द टूल्स. बहुत सारे टूल्स को एक साथ ग्रुपिंग करना, दैट इज़ फ्रेमिंग. कमांड बटन, इट मीन्स इट इज़ यूज टू स्विच, ओके, कैंसिल, येस, नो, डिलीट, ओपन, सबमिट. दे ऑल आर द कमांड बटन. इट मीन्स वी आर कमांडिंग देयर. Next is checkbox. Checkbox, it means it provides the user a toggle choice.
चेकबॉक्स टॉगल चॉइस होती है कि हम दोनों चूज़ कर सकते हैं या सिंगल चूज़ कर सकते हैं. क्लियर? दिस इज़ द चेकबॉक्स. ऑप्शन बटन. एन ऑप्शन बटन इज यूज फॉर सिलेक्शन एज अ ग्रुप. मैनी ऑप्शन आर प्लेस इनसाइड कंटेनर. ऑप्शन बटन का मतलब ये होता है कि एक ऑप्शन बटन पर अगर हम क्लिक करें तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. क्लियर? सो सिंगल सिलेक्शन से सारा सिलेक्शन हो जाता है. लिस्ट बॉक्स like a drop down list, it allows use to add and delete items from the list. List box, like we are making a list box as a family member, then in the family member there will be the grandfather, grandmother, father, mother, sister, brothers. Okay, so this is the list box. Next is combo box. It draws a combo box. Combo box means we can create here list and text both. H scroll and V scroll, it means horizontal scroll bar and vertical scroll bar, and you all knows about the scroll bar. Clear? So navigate your page. This is the scroll bar. So next is timer. Timer, it means it plays a timer on a form. Next is drive list box. We can use this list box to access a drive. Drive, it means CD, DVD, etc. we can access in this option. And dir list box, it means saved in the system. We have saved some directory, so we can access all the directories by this option. Next is file list box. File list box, it means it is used to access files in a directory. Shape, it means we can draw any shape. Line, it means we can use the draw lines. Image, it means we will show here some images. And data, it means we can connect with the database. Database, it means organizational form of any data. It means अगर हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में रखते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म कैसी होती है? एज अ टेबल, एज अ रिकॉर्ड्स, एज अ रो, फील्ड्स. ओके, दिस इज द डेटाबेस. नेक्स्ट इज OLE. It is used to interact with other window application. It means we can connect with other application by this term. Clear, students? So next is the menu bar and the toolbar. We can see here a menu bar, file, edit, view, project. This is the menu bar, and below this is the toolbar. Okay, so there are many tools we can use. Form layout window. First is here the form layout window. Right side you can see there a form layout. It means as a single form you will see here. जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया फॉर्म आपका आएगा. इट्स ऑलरेडी पोजीशन होता है. एंड सी द चेंजेस एट द फॉर्म विंडो. जैसे जैसे हम इसके साथ चेंजेस करते हैं वैसे उसके साथ चेंजेस होते रहते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज विंडो. द प्रॉपर्टीज विंडो, इट मीन्स लेफ्ट साइड सी हियर दे आर द प्रॉपर्टीज विंडो. प्रॉपर्टी किसकी? फॉर्म की प्रॉपर्टी. क्लियर? द प्रॉपर्टीज विंडोज कंटेन्स द लिस्ट ऑफ डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टीज फॉर अ सेलेक्टेड फॉर्म, कंट्रोल, क्लास, मॉड्यूल और मेन्यू. इट मीन्स जब आप अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे उस टाइम आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो लाइक यू आर यूजिंग चेक बॉक्स. ओके, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी. यू आर यूजिंग रेडियो बटन, देन रेडियो बटन की प्रॉपर्टी. आप ऑप्शन बटन यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टी. इट मीन्स जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसी की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी. प्रॉपर्टी, इट मीन्स उसमें किस किस टाइप का फंक्शनलिटी, लाइक कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं. सो दे ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट window. All the objects that make up the application are packed in a project. Project window is located on the right side of the screen just under the toolbar. It serves as a quick reference to the various elements of a project. It means right side you can see here a project window. वो आपको मेन फॉर्म पर भी राइट साइड ही दिखेगी. क्लियर? सो राइट साइड आपको इस टाइप की एक दिखेगी फॉर्म. सो प्रोजेक्ट 1 इट्स योर मेन प्रोग्राम. देन फॉर्म्स, आप कितने टाइप के फॉर्म्स आप इसमें यूज़ करते हैं. इट मीन्स इन अ सिंगल प्रोजेक्ट वी कैन यूज़ मल्टीपल फॉर्म्स. हम बहुत सारे फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी द फॉर्म्स. फॉर्म 1,
Here we are only used a single form, that's why here the form 1. अगर हम बहुत सारे forms use करते हैं then form 2, form 3, form 4, form 4, and you can rename also them. Next is object browser. The object browser allows us to browse the various properties, events and methods related to any object that is made available to us. Object browser can be accessed either by pressing F2 key or selecting it from the view menu. So browser जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र मेन्यू जो होता है हम उसे F2 की से भी कॉल कर सकते हैं या व्यू मेन्यू में हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन सी द लेफ्ट साइड इन द ऑब्जेक्ट browser allows us to browse the various property of the event. clear? जो भी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स हम कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को रिट्राइव करने के लिए ऑब्जेक्ट ब्राउज़र यूज़ किया जाता है. एंड द लास्ट इज़ द फॉर्म विंडो. फॉर्म विंडो इट मीन्स डॉटेड लाइंस में आपको ये फॉर्म विंडो दिख रहा है. जैसे ही आप क्रिएट करते हैं फॉर्म 1 सॉरी जैसे ही आप क्रिएट करते हैं फॉर्म 1, सो यू विल सी हियर द फॉर्म 1, फॉर्म 2, whatever. Clear? The form window is a primary work area where the visual development of the application is created or modified. Although the form window first appears small relative to the rest of the screen, the form window comprises the background of the application. Clear? So when you will open your form or you will select your form, you can write here your code for the next further programming, and the form window shows the main body of the application. It shows the main body, main functionality of the application, and the form can be resized to take up the width of the screen, and we can resize this form also. The form window only holds objects such as command button, label, text box, scroll bars and other controller to form the main elements of the graphical user interface. The VB language is a GUI based application, that's why we can use here the form, and on the form we can use many types of functionality or many types of tools are there. So text box, labels, scroll bars, they all are the tools. Okay students, so this is our points for the Visual Basic. In our next video and in our next class we will discuss about the creating your first application. In a video I will give you some coding or some example of your practical session. Okay, thank you so much, and if you are facing any problem you can discuss to me. Okay, thank you.